हरे कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है आपके पसंदीदा शो आपके मन की बात हमारे साथ के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सभी को बता दूं कि हमारे जो बुधवार होते हैं, जो वेंसडेज होते हैं, वो बहुत ही सुंदर कॉज को डेडिकेटेड होते हैं। हम वेंसडेज के दिन यहाँ वहाँ की कहीं की बात नहीं करते, केवल भगवान से शुद्ध, परम और श्रेष्ठ भक्त की बात करते हैं। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वे भली भांति जानते हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। दर्शकों, हरे कृष्णा टीवी ने पिछले कुछ महीनों से अपने बुधवार को केवल गौ माता के लिए एकदम से बुक कर रखा है। वेंसडेज के दिन हम एक साथ मिलकर के पूरी दुनिया से ऐसे उन्नत गौ सेवकों से बात करते हैं जो अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से और अपने स्वयं की सेवाओं से गौ माता के विषय में हमारे साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को शेयर करते हैं। बीते महीनों में हमने बहुत सारे अलग अलग लोगों से बात की है, पूरी दुनिया के, पूरे देश के विभिन्न जगहों से लोगों से बात की है। ऐसे ही आज भी हमारे बीच एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति जुड़ने वाले हैं, जिनका जीवन, जिनका बैकग्राउंड, जिनका लाइफ का आज का सेटअप सब कुछ अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। भारत देश में जिसे धर्म का और संस्कृतियों का देश माना जाता है, इसी देश के लोग, जब इसी देश के देशवासी इस देश को छोड़कर अन्य किसी रीजंस के वजह से, काम जाम के वजह से किसी और स्थान पर जाते हैं, तब वे अपनी संस्कृति और अपने वैल्यूज, अपने धर्म को अपने साथ लेकर जाते हैं। आज मुलाकात होगी ऐसे ही एक कृष्ण भक्त से, एक गौ सेवक से, जो कैलिफोर्निया में बैठे हुए गौ माता को एकदम उच्च स्थान, उच्च दर्जा दिए हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ श्री कृष्ण पुरुषोत्तम प्रभु जी की, जिनके भाई श्री राम प्रभु जी अभी कुछ दिनों पहले हमारे साथ जुड़े थे और हमने जिनसे बहुत ढेर सारी बातें की थी। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो सुरभि गो क्षेत्र गौशाला, वापस कहती हूँ, सुरभि गो क्षेत्र गौशाला जो कैलिफोर्निया में है, इसके फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं। साथ ही वे प्रेसिडेंट ऑफ सस्टेनेबल इको अलायंस है, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ सस्टेनेबल इको अलायंस। वो इस्कॉन सिलिकॉन वैली में एज अ को संकीर्तन लीडर के पद पर भी नियुक्त हैं। इसके अलावा आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो भारत का जो एक राज्य है राजस्थान, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जहां पर सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट है। राजस्थान में जब अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर जो गौ माता फंसी होती है, जो गौवंश होते हैं, उनके लिए वे चारा पानी का पूरा इंतजाम करते हैं। साथ ही वो वहां पर रह रहे लोगों के लिए, राजस्थान के अलावा अन्य छोटे ग्राम, छोटे गांव में रह रहे लोगों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी धन का दान देते हैं, जिसके तहत एक योजना है ग्राम विद्या धन। इसके तहत वो बच्चों की फीस भी स्पॉन्सर करते हैं। इसके अलावा आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो प्रोफेशनली बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अपने एक एम्प्लॉयड हैं और वहां पर वो अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही एक बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न पॉपुलर कॉन्सेप्ट है काउ कडलिंग, जहां पर लोग गौ माता को आलिंगन करके उनके साथ समय बिताकर लव एक्सचेंजेस करके अपने स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वे अपने खुद की गौशाला में ऐसे काउ कडलिंग थेरेपी सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके तहत बड़े बड़े लोग, लोकलाइट्स ऑल्सो, साथ मिलकर के गौ माता के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी हमारे वेंसडेज के जड़ को नहीं भूले हैं। इन शोज को स्टार्ट करने के पीछे का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि गौ माता के साथ हो रही हिंसा, क्रूरता और उनकी हत्या को उजागर किया जाए, उस पर प्रकाश डाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब उसके भागीदारी हैं। हम सब के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस के वजह से आज भारत में बहुत ज्यादा गौ हत्या हो रही है। आइए श्री कृष्ण पुरुषोत्तम प्रभु जी से जानते हैं कि गौ सेवा कैसे कर सकते हैं, गौ हत्या कैसे कम कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो टॉपिक है दिवाली पर जहरीली मिठाइयों के विषय में, उस पर भी हमारे गेस्ट आज के लाइमलाइट डालेंगे। अधिक कहने के लिए माफी चाहती हूँ। चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री कृष्ण पुरुषोत्तम प्रभु जी का। Hare Krishna. Thank you, Suti, for inviting me. I'm actually sitting with my cow here, one of our cow. Her name is Mohana. So she is just standing. So I just want to make it more real, this one. So thank you for inviting. I just watched some of your episodes in the past. So Hare Krishna Television, from you as a host, you are doing fantastic job. And even I'm staying in US, it's a different time zone for me, but this is a great service for Go Seva all over the world. Thank you.
for Hare Krishna TV and UCP. जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपने हमारे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। दर्शकों, आज के हमारे गेस्ट यहाँ पर इस वक़्त कैलिफ़ोर्निया में है और टाइम डिफरेंस आप देख सकते हैं, आपके आजू-बाजू अंधेरा हो चुका है, लेकिन हमारे गेस्ट के आजू-बाजू सूर्य का प्रकाश है। वहाँ पर अभी सुबह हुई है, लेकिन उन्होंने हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम को एडजस्ट किया है और वो अभी उस स्थान पर हैं, जो स्थान उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी देती है। प्रभु जी, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि आप कैलिफ़ोर्निया में कितने समय से हैं और कैलिफ़ोर्निया में आप ये गौशाला के तहत सेवाएँ कितने समय से कर रहे हैं? So from last 20 years, I'm in California. So Goshala we started in 2020 April. So we started non-profit on 2015. So this non-profit is especially focus on cow protection, and for the especially for cows is very dear to Lord Krishna. And I have a little background to share why we started this Goshala in Silicon Valley, especially. So, to 2018, we did a cow cuddling conference or cow culture conference in Silicon Valley, and we invited Bhakti Charu Maharaj, Bhakti Raghav Maharaj, and Subramanya Swami, and it's the first ever cow culture conference in North America. So after the conference, and all decided why you want to have this cow culture, so especially in North America. So Maharaj suggested have a model goshala in California, so that like how we can serve cows, and you can show in a practical example. So taking Bhakti Raghav Maharaj instruction, so we started this goshala in California. So yeah, right now we have around 30 cows and bulls, around 22 cows and 9 bulls. So and I live in the goshala, my house, I have 2 children. I have a day job, as we mentioned earlier, and in the backyard I have this barn, and we manage this goshala. It's called Sri Surabhi Kokshetra. बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि हमारे आज के जो गेस्ट हैं, वे वैसे उनका जन्म दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में हुआ है और वो पिछले 20 वर्षों से कैलिफ़ोर्निया में हैं, तो उन्हें ठीक-ठाक हिंदी नहीं आती और जो आती है, वो भी बहुत हेवीली एक्सेंटेड है। इसलिए आप शो में अंत तक बने रहिए, मैं उनकी बातों को आपके लिए समराइज़ कर दूँगी, लेकिन अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का टॉपिक और सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु जी, आपने 2018 में एक बहुत ही सुंदर काऊ कल्चर कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद आपने 2020 में काऊ प्रोटेक्शन के तहत इस गौशाला को शुरू किया और आप अपने परिवार के साथ इस गौशाला में रहते हैं। आज लगभग 30 गोवंश है, 22 गाय हैं, 9 बैल हैं। ये बताइए प्रभु जी कि इतने सारे गाय आपके पास पहुंची कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछा, सुति. Many years ago, I'll do a history of Gir cows coming to US. Many years ago, Bhavnagar king gave cows to Brazil. So from Brazil, they migrated to Texas and to Mexico, and from Mexico in Texas border, I went in 2020 personally myself, and we rescued around 12 cows and 1 bull. So these cows are naturally Gir cows, and they're very docile, and they're all immigrants like me, came to this country. So all these cows. So we preserve these Gir cows in California. So after we bought these 12 cows and 1 bull, the Giriraj, the bull name is the Giriraj. All cows have names, and I'm sitting with Mohana. You can see in the back. So especially this breed of the cows very docile, and that's why we went to this. I personally went to the Texas border and rescued them. So if you won't rescue them, what will happen? They may end up on the somebody's plate. So especially in this country where I am living, they call livestock. Livestock is a bad word. We consider gomata, right? And gomata, and also Nandi is our father. So as Srila Prabhupada told, cow protection, Krishna loves cows, and
as a Sanatan Dharma followers, we need to protect those cows. So that's why I went and personally, and I got all support from all the Sanatan Dharma followers, and we started this Gokshetra. हम्म। ये अपने आप में प्रभु जी बहुत बहादुरी का काम होता है, बहुत ज्यादा शक्ति का काम होता है कि आप किसी सिस्टम के खिलाफ जाकर के आप एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सेटअप के अगेंस्ट जाकर के काउस को बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। और ये इतनी ज्यादा दुख की बात है कि एक पशु है, एक जीव है जिसे अपना वहीं उसी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उस जीव में अपना भोजन दिखता है, अपना स्वाद दिखता है, अपना स्वार्थ दिखता है। ये अपने आप हमारे समाज का ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो डुअलिटी है, ये हमारे सामने एस्टैब्लिश करता है। आपने ये जो वर्ड यूज़ किया प्रभु जी, लाइव स्टॉक, इसके संबंध में भी मेरे पास एक प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो प्रभु जी, हमारे भारतीयों में, हमारे सनातन धर्म में गौ माता को गाय को गौमाता का दर्जा दिया गया है, और वहीं गौ माता के साथ डेयरी इंडस्ट्री के तहत इतनी सारी क्रूरता होती है। उनके दूध को पीने के लिए उन्हें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जाना पड़ता है। उनके बच्चे की डिलीवरी जब होती है तो बच्चे को उनसे छीन लिया जाता है। इफ द बेबी इज अ मेल तो उसे वही मार दिया जाता है, बिकॉज ही विल नॉट गिव मिल्क व्हेन ही ग्रोज अप। अगर लड़की भी होती है तो उसे थोड़ा सा दूध दे के जिंदा रखा जाता है। द मैक्सिमम मिल्क इज पैक्ड एंड डिलीवर्ड। और रिपीटेड प्रेगनेंसीज के बाद जब उनका ध्यान भी नहीं रखा जाता है, जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तो उसे स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता है। When you look at this scenario, आप क्योंकि इतनी हद तक, इस लेवल तक आप गौ सेवा में इन्वेस्टेड हैं, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, जब आप इस सिनेरियो को देखते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? और ये मैंने अभी जो नरेट किया, ये तो फिलहाल भारत की स्थिति है। क्या कैलिफोर्निया में भी जब डेयरी इंडस्ट्री की बात होती है तो इज द पिक्चर समवॉट सिमिलर? आप सही बताया, सेम थिंग कैलिफोर्निया में भी, नॉर्थ अमेरिका में बहुत गाय को डेयरी इंडस्ट्री इज द मोस्ट पैथेटिक यूनिवर्स डायरी, स्पेशली हम भारत में भी है और कैलिफोर्निया में कहाँ भी एक ही है। सो हियर हम कैलिफोर्निया में रहता है, लॉस एंजल्स के पास बड़ा कत्ल खाना है, cow slaughtering place. So every day they kill thousands of cows. So and as you mentioned, Suti, rightly, that if male calves borns, they will kill on the same day. If the female calf borns, actually the cow lifespan is 25 to 30 years, right? If the cow is happy, like our cows here, so they live happily because they see the place and they trust the humans, right? So here they just has a look at as a milking mission. Oh, milk ke liye and you seen the normal, the children here, they have glasses at the very young age, and because the hormones coming from these cows, when you separate the baby from the mother, right, how we feel. If you won't see हमारा थोड़ा बच्चा बच्ची कोई, if they go to one room and we forget where they are, and we are in so much anxiety, anxious. So how the cow gomata will feel, right? Oh, gomata को पहला दिन में वो separate करता है, and then if the male calf, they kill it on the same day, and they never get to drink mother's milk. Even it's a female also, they never get to drink milk. So what they do is they keep it in separate, and all the milk comes from the day one. They just give it to the humans. They pasteurize it and give it to humans, but the calf never get to drink her own mother's milk. So yeah, situation both are very unfortunate. So इसीलिए हम I took a vow that from last 20 years, that 15 years I don't take milk from outside. Even it's in the mandir mein, so ghee, I don't take any himsa milk. So after this vow, now our cows gives milk. I take those milks, and even for my children, and our ठाकुर जी को भोग लगाता है, वही हमारा गाय के दूध और घी और दही और योग, so सब पंचगव्य प्रोडक्ट्स हमारा गौशाला को हम यूज करते हैं. So इसीलिए this is very very important. हमारा सनातन धर्म फॉलोअर्स
I traveled all over the India. So we also do dotan. Not, we don't milk 4 teats, we milk only 2 teats. So that the 2 teats can drink by the calf. So all the standards, it's coming from our traditional Vedic life. And Srila Prabhupada emphasized this cow protection in the every canto of Srimad Bhagavatam. So after seeing our gomatas, lot of people are changing. So the people have this problem having the milk they cannot digest. But especially our Indian cows are Gir Gomata, their milk is very light, and people are can able to consume. They don't have lactose intolerant or any of those things when you take our milk. So and cow milk is the secondary part actually. When you take Gomata, it gives like gobar is called govar, you know. So it's whatever we byproducts of the cows is all like a boons for us, like a war for us. So that's why we help to do as much traditional. And the feed I give to the cows is very traditionally coming from India. And also the grass and everything, right? It's all organically. Actually, cows take care of us, not that we take care of the cows. So yeah, that's why it's very important to keep goshalas. Every temple should connect to a goshala, so that uh, our deities here, especially Radha, Madan Mohan, and we have Jagannath, Subhadra, Balaram. So when we offer this milk, Krishna will be happy. So if you offer the milk coming from the outside, how can Krishna can be happy? So we have to look at all these various angles, right? Cow protection is not a single person job; it's entire village. Thank you so much, Prabhuji. वी कम्प्लीटली अग्री विद यू। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रभु जी की पूरी बातों को सुना है। अपने आप में ये एक चश्मदीद गवाह है इस बात का कि प्रभु जी काफ़ी सालों से इस चीज़ में इन्वेस्टेड है, और उन्होंने एकदम सही वर्ड्स में कहा कि डेयरी इंडस्ट्री इज़ अ वेरी पैथेटिक इंडस्ट्री। आज के हमारे समय में जब हमारा बच्चा कुछ पलों के लिए भी हमसे दूर हो जाता है, हमारी नज़रों से दूर हो जाता है, तो हम कितने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, लोगों के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और वही चीज गौ माता के साथ खुले आम हो रही है। उनके बच्चे को इस दुनिया में लाया जाता है मात्र इसलिए ताकि उस बच्चे के आने से जो दूध आया है वो हम पिए। इससे क्रूर इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप दूध पीना छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करना भी इट्स नॉट द आइडियल थिंग टू डू। तो प्लीज आप सभी भी अपने आजू बाजू अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो गौ सेवा करना चाहता है, जो गौ माता के विषय में कोई ठोस कदम उठाना चाहता है, तो प्लीज आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। एंड प्रभु जी, यू वेरी राइटली मेंशन दैट काउ प्रोटेक्शन इज नॉट वन पर्सन्स जॉब। ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और ना ये एक व्यक्ति का काम है, क्योंकि गौ माता, ये जो माता कही जा रही है, ये केवल उस एक व्यक्ति की माता नहीं है। शी इज द मदर ऑफ द यूनिवर्स। वो हर किसी की माँ है, तो हर किसी को उनके प्रति कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रभु जी, यू स्पोक अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो, कि आपने पिछले 15 सालों से कमर्शियली आ रहा कोई भी दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लिया है, और आप केवल आपके पास जो अवेलेबल होता है, आपके गौशाला में जो दूध अवेलेबल होता है, उसी से इन चीज़ों को तैयार करते हैं। बट प्रभु जी, व्हाट अबाउट स्वीट्स? क्योंकि आज के हमारे इस टॉपिक में हम दिवाली के विषय में बात करने वाले हैं, दिवाली पर आने वाली मिठाइयों के विषय में बात करने वाले हैं। तो दूध से बनने वाला घी, दही, छाछ, लस्सी, बटर, चीज, ये सारी चीजें तो हम खा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट स्वीट्स? और हमारे टॉपिक में ऐसा लिखा है कि दिवालियों में मिठाइयों के आड़ में जहर बेचा जा रहा है, जहर मिलाया जा रहा है। तो आई एम श्योर आपने जो सुंदर सा प्रेजेंटेशन इस विषय पर तैयार किया है, क्या आप वो इस समय दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? Absolutely, yeah. This is especially Diwali time, how ghee is adulterated. So Srila Prabhupada ka ye quote bataya hai, so keep Krishna cows here, calves here, produce your own food. It will become Vrindavan. This is Vrindavan. Wherever there is Krishna, where there are cows, where there is agriculture, that is Vrindavan. Srila Prabhupada is very, he told many times 50% of my mission is not done. Varnashrama dharma, cow protection is not established as Srila Prabhupada wants. That's why आप नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं। मैं दिवाली के स्वीट्स के बाद I put
few things like the dark side of sweet making in India. So आप next slide जा सकते हैं. So the culturally हम दिवाली में सब so there are so many ingredients we make with the milk, and this all milk sweets और ठाकुर जी को फार्म फ्रेश में प्योर घी और जैगरी से if you offer it to Thakur ji, that is more blissful for the Lord, and Lord can have that and that bhog, right? So if you buy from milk from outside, so we know, right? One ghee, 1 kg of ghee, you need 35 liters of milk. So you need to have a pure ghee. So how many people? 35 liters is, I don't know the price here. At least in US, it's expensive, right? So to get a pure milk, first of all, there is no pure milk at all are adulterated, all are pasteurized, this harmonized milk. So if you go next slide, Prabhu. So there are a lot of ingredients which is the quality and the cost cutting, for that. For health, they don't look at the health risks. So even I saw like major brands in India, they add vanaspati. Vanaspati is dalda, and so many other artificial things which is not natural. So so if you take that kind of a milk or a ghee and you make the sweets with that, it's it's not good for your health, it's not good for your spiritual, and it's not good for anything. So that's why I can go next slide, Prabhu. I put together what are the things they next one. So all the preservatives, the synthetic milk, they put water and the chemical additives, like they put next slide, from next one. Yeah, so you see here vanaspati, they put coconut oil, palm oil, and animal fat, and all this coming from the cheaper sources. So, and then if you test it also, you can see, you can send some ghee to a lab and find out that some labs, they don't even test it because it's having so much chemical. Even in, I am from Tirupati, they adulterated Balaji's laddu also, so with the putting this kind of a ghee which is coming from the animal fat. So as a Sanatan Dharma followers, we should not take this kind of a ghee, and not make sweets with that type of ghee. And so Krishna, when he was in this planet, he showed by example Amara Gomata, like how we can take care of them. He personally became a Gwala, Lord Krishna, right? So he set an example for us. हम सबके लिए एक वो एग्जाम्पल दिया है, कैसा गाय को पालन करना, कैसा गाय का प्रोडक्ट्स यूज करना. वो कृष्ण बलराम वो फॉरेस्ट में when they used to go to the forest, they used to take this pure ingredients where is coming from the 90,000 cows from Nanda Maharaj. हम इतना we cannot make that much big. Even you have दो गाय तीन गाय at your home, or you can go to the goshala nearby, get a pure milk. वो तो expensive है, but हम डॉक्टर के बिल को हम बढ़ाएंगे नहीं, or you want to take care of the health by cooking the nice ingredients. So scientifically, dharmically, it's good to use, and we need to provide that supply, the demand karna hai. So Suti, you went in a flight to anywhere in India or abroad. आप जानता है there is a Jain food. I asked a question to a person, why the Jain food is offered in the flights. Jain food is offered because there is a demand for it, and like that we should create those demand and use only the products coming from goshala. It's called cow based economy. So people just, they, especially in the dairy industry, they don't just kill the cows or beef for those kind of things. They kill to that economy there. We need to boost that economy by consuming those products. So wherever there is a demand, there will be a supply. So that demand we need to create, and again it should be a natural, not artificial, like as you mentioned, artificial semination. So every year they make a baby with the cow so that they can milk. They can do use those milk uh, for their own personal selfish, and they don't give it to the baby also. So that's why we need to have this natural way. The cow grazing, cow should be grazed.
uh, Gavo Vishwasya Mataraha. Cow is our universal mother. We have to take care of her, and then she will definitely take care of us, right? So when they graze, when you leave the cow, naturally it go out and graze it. So when you gachati gavaha, like, so when you give that gritam means having the ghee should be churned, like, right? And when you make the yogurt to butter to ghee, then only it is called ghee. Now what they do is they skim the milk and take the cream of the milk and make that ghee, which is not correct. And even the coming from to we import the ghee from India, and I only go to the goshalas which I have been there. I went to Rajasthan, I went to Vapi, Gujarat, and those farms I consume those ghee. If we need, for especially for festivals, I need more ghee, and even our cows cannot produce that much milk. So I, even though it's expensive to ship it to US, I'm happy to ship it and offer that to Krishna. So in a nutshell, Suti, this is we should, as a followers of Srila Prabhupada, and also see, these are the just cows, some of the reasons why cow is slaughtered. It's not only for the as a beef, that is a byproduct, right? You see all these things. You people consume ice creams, people the balls and the sofa leather seats, and there is itna reasons है गाय को वो मारने के लिए. So you see all these things. If you buy all these products, the economy will be boosted. So recently some of our devotees making the cloth, ahimsa cloth, from they make cow based like the cotton, bt cotton is all chemical farming, right? So when you use this type of a cloth which is coming from the natural cow based, like a panchagavya, also we use गो आधारित व्यवसाय, हम गाय के सभी काउ डंग, काउ यूरिन, and this is a substance आप देख सकते हैं called tallow. Tallow is like a byproduct coming from the calves and also the bones of the cow. गोमाता हड्डी से बना ये tallow, ये सभी शैम्पूस, लिपस्टिक्स सब में यूज करता है. इसीलिए ये हम कोई प्रोडक्ट बाजार में हम खरीदता है, हम देख को खरीदना है. ये how it can help हमारा गोमाता. Go next प्रभु, आप नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं. सो एंड द सोप में ऐड करता है ये सभी प्रोडक्ट्स में. ये एक स्प्रेडशीट बनाया क्या क्या, लाइक lot of soaps they use this tallow, this substance coming from the cow's fat. Go next. हमारा chocolates, see Cetaphil, Dow, you can see it's very soft in nature because they add all these byproducts, so where it contaminates everything. आप एकादशी व्रत रखता है, सुबह उठ को ये सोप लेको आप, गाय का, the fat coming from the cow, you use that one, which is not good for your health. So इसीलिए हम we should not use this kind of things, and we need to go next. You see Kit Kat chocolate. Kit Kat chocolate may be the soft part coming from the calf's intestines. So it's very hard, and our children, when they go to the school, they give this kind of chocolates and all those things. They should know what is best for their interest. That's why we should be very, very careful. And all these products, McDonald's, Nestle, and they kill the cows for make to byproducts of this one. So I want to stop here because we have less time. But Suti ji, you dekh sakte. So that's what I am saying. Adjust demand. You see Bhakti Raghav Maharaj, Bhakti Vikas Maharaj, and also Vaisheshika Prabhu, all they took only ahimsa products, and we create those kind of a demand. So I think there is a transmission, some problem with the technicality. Hare Krishna. जी जय जी. प्रभु जी, Okay. कुछ हमारा ऑडियो का इशू हो गया था,
अच्छा सबसे अच्छा। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, वुड रियली लाइक टू थैंक यू बिकॉज़ यू टूक आउट टाइम और आपने हमारे लिए इतना ज़्यादा रिसर्च किया, इतने अच्छी तरीके से आपने सारे पॉइंट्स को कॉन्ग्रीगेट करके एक प्यारा-सा प्रेज़ेंटेशन बनाया और उसमें बहुत ही पॉइंटेड शार्प पॉइंट्स थे और ऐसे कुछ बातें थी जिसके विषय में लोग अक्सर बात नहीं करते या खुल के बात नहीं करते। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न लेकिन क्योंकि आपने ये हमारे लिए आगे किया है क्योंकि हरे कृष्ण Oh, Sutiji, you went on mute again. Sorry. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, just we'll wait for. जी, Yeah, मतलब yes. ऑडिबल नाउ? Yeah, yes. हुँ, तो Yes. वही बात है कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना प्यारा प्रेज़ेंटेशन बनाया। दर्शकों, अब आधा काम आपको करना है कि आपको ऐसे ब्रांड्स को सपोर्ट नहीं करना है, आपको केवल ऐसे ही जगहों से अपने चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को खरीदना है, जो फॉर श्योर गौ-माता के फ़ेवर में है, उनके प्रोटेक्शन के फ़ेवर में है और आपको इस शो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है। प्रभु जी मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपने यहाँ पर कैलिफोर्निया में ये जो एक सुंदर से गौशाला की स्थापना की है, अल्टीमेटली इसका एक पर्पस क्या है? एंड ओवर द कोर्स ऑफ 5 इयर्स इन 5 सालों में आपने अपने इस प्रयास से कौन से परिवर्तन लाए हैं समाज में? Uh, Excellent question, Suti. So when I'll just tell a small story, my personal experience. When I got the cows from the Texas, so it came to goshala. So I have some experience. मेरा छोटा उम्र में we used to have cows. My parents and my father, my brother, everybody have cows. But I I mean itna I didn't do hands-on work. So गाय को कैसा चारा खिलाना है, that's a part of natural thing. But when the cows came in, we did the arati, and I didn't do the fencing at one place at the goshala. So I thought cows won't jump there and they don't go to other direction. But when as soon as they came, they jumped on the same place where I thought they don't go. They went on the mountain. So and then there is a school next to the goshala. My worry is that tomorrow morning, uh, if the kids goes to school, all cows are in the school. So and in US laws both strict. You cannot have the cows in the backyard of the house. Both very very strict rules. So I was praying to Jagannath. See, at the time the night it was 11 o'clock. So I don't know how to get them back. उसका नाम भी नहीं दिया अभी तक, वो रिलेशनशिप नहीं है. So then I was thinking what to do. तो क्या करना है? So then I was literally pray to Lord Jagannath. I asked the person who got the cows. I said, "Can you help me?" Yeah. Then I said, "Okay, sure." Then uh, I'll pay you more. बहुत ज़्यादा लक्ष्मी देंगे आपको, कुछ करो. So then he said he got horses from the nearby city, and then the horses around 11:30 in the night. He went on the hill, and they all cows walked with the horses. They opened the door, and after that, even they are on the mountain. If I call them, I made a video. You can follow us on our Instagram, Bay Area Cows, Sri Surabhi Gokshetra. So there, now I have a relationship. So the cow came in the Raja Marga. So once आप bonding होता है गाय के लिए, if you make the bonding with them, they will be happy. Like she's now Mohana is also listening our podcast here with me. So they'll have their own bonding. So after that, the cow, now we came in a newspaper recently, Sri Surabhi Gokshetra, how the gentle giants, and lot of people after seeing the gomata, we do, as you mentioned Suti earlier, that we do cow cuddling therapy. What is cow cuddling? Naturally in India we do cow cuddling when गाय के ऐसा, when we sit with them, right? So I have some pictures you can show on the screen. So when they sit with them, the lot of people, they have this anxiety issues. So that anxiety is because of their work.
go next. So this is Jahnavi Harrison. She's a great Hare Krishna singer. You might be. She and her husband came to our goshala. This is our Sita. So they come and sit with the cow and cuddle them, and they all the anxieties levels they have it will go away, and they will sign a form that they never harm a cow after this, and that's that. And also we charge $100 per hour. That means 8,000 rupees. Prabhupada, आप कोई cheap में दे तो people they won't take it. So that's why we charge for it, and we maintain the goshala with that money. So actually, मेरा personal experience है. One lady, she came from other part of US, Southern California, San Diego. She's a VP of a big company, like a sales company. उसको ज़्यादा pressure है. She have lot of pressure. So what happened? She came to our goshala, stayed in our goshala in our guest house, and then she said, Krishna ji. So in English, of course, she told that my anxiety levels are go down. After seeing your cows, I'll stop eating beef. ये हमारा success है. So like when you work with them, gomata can speak with them. See up, and also we came in a NDTV, and we got our gomata. I take cows to house farming like India. So it's not apartments, it's a single raised building, and we take our own carpet, and we take the gomata ka food, and I take cow and the calf to the houses, to the temples for house warmings, so that our culture should need to know by everybody. And even the Americans, they are Caucasians, the Westerns, they said, bring cow to our house, we need blessings too. So this is and then lot of now children come to our goshala, and we do Govardhan pujas and all traditional festivals, and Rushabhostav we are doing it in next 2-3 days. So like that, and community is getting benefited. So we have already around 4,000 visitors comes to goshala in a 1 month of span, and it's fully, this cow cuddling is fully booked for next year also. So and people are waiting for the open slots, and it's all as gomata is also Lakshmi. When you take care of them, and as I said, she will take care of us. So and this cow cuddling also helps people who have disabled, right? They have issues with mm, uh, their thought process, um, or they cannot able to walk, or mental issues. So they come and sit with the cows, and then once they sit with the gomata, then everything will be normal, and they feel so happy. And आप टाइम है तो आप इंस्टाग्राम में हमारा रिव्यूज देख सकते हैं. So we got all 5 stars, and local newspaper प्लेजेंटन में हमारा शहर और nearby town. So it came in a newspaper saying that this cow sanctuary is protecting cows, and it came on a magazines about cow cuddling therapy, and also by Prabhupada blessings, Bhakti Raghav Maharaj blessings, Gomata blessings, it is creating so much awareness for the community, and also it's education process. So क्षमा कर दो, मैं बहुत इंग्लिश में बात कर रहे हैं. So our Mohana is me getting up now. He's got okay. I'll just Hare Krishna. Okay, yeah, that's about our Goshala Stuti, that we are able to do this. जी Prabhu ji, we are very, very grateful, and I would like to congratulate you for this long journey. आपकी जो इतनी सुंदर यात्रा रही है 2018 में से 2020 में से आज 2025 में, आपने इतना कुछ गौ माता की सेवा में कर लिया है, इतनी सारी चीजें, इतने सारे लोग, और समाज में इतना एक सकारात्मक सुंदर प्रभाव पड़ रहा है, जहां पर लोग गौ माता के साथ कुछ समय बिताने के बाद ऐसा संकल्प ले रहे हैं कि अब से वो बीफ यानी गौ मांस खाना छोड़ देंगे. इससे बड़ी कोई सफलता नहीं हो सकती है, जहां पर इतने सारे लोग इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप एंजाइटी से परेशान हैं, चिंता में अगर आप पूरी तरह से ग्रस्त हैं, तो आप गौ माता के साथ समय बिता सकते हैं. Considering this in itself is a big achievement that people have it in their heads
that they look up to you, up to your cows as a solution, as a place of peace. और ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। प्रभु जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप अपने गायों को लेकर के हाउस वार्मिंग के लिए जाते हैं, आप गृह प्रवेश में जाते हैं और लोग आपसे सामने से कहते हैं कि आप अपनी गौ माता को लेकर आइए, हम उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर बात है। हम आभारी हैं आपके कि आप इतने जोरदार तरीके से गौ माता के विषय में प्रचार कर रहे हैं, गौ सेवा के विषय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ऐसे लोगों को भी आप एक गौ माता से संबंध बनाने का अवसर दे रहे हैं जो गौमांस खाते हैं। लेकिन ये गौ माता की कृपा है कि गौ माता के साथ समय बिताने के बाद उनका ये जो हैबिट है, ये जो उनकी एक लत है, ये छूट रही है। प्रभु जी, मुझे ये बताइए कि हमारे वेदों में गौ माता को इस धरती का आधार कहा गया है। शी इज द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ। और क्योंकि आप इतने समय से इतने इंटीमेट तरीके से गौ माता से कनेक्टेड है, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि एक गौ आधारित जीवन, काउ बेस्ड लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल बैलेंस और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इन दोनों में एक कैटलिस्ट का काम कैसे करता है? एनवायरमेंट में बैलेंस बनाने के लिए गौ आधारित जीवन कैसे योगदान देता है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए गौ माता कैसे योगदान देती है? Uh, that is excellent question. How cow can be part of our central of our entire life. How we are, especially lifestyle is very important, right? When you be with them, the go adharit vyavasaya, as I said, when Bhakti Raghav Maharaj came to our goshala, he asked, "Do you have any vegetables grown in your farm?" महाराज, मैं गाय को देखभाल करता है, बट मैं फार्मिंग नहीं कर रहा है। सो महाराज सेड, यू ग्रो योर ओन फूड। सो देन वो इंस्ट्रक्शन लेको हम गौशाला में अभी वी आर यूजिंग like the panchagavya and other product, like go adharit vyavasay, like we put this concentrated, right, is jivamruta. You might be heard this, Suti, that we add cow dung, cow milk, and then cow urine, chickpea, and we ferment for 10 days, so that then you give it to the plants. Now we have enough vegetables at the goshala. We make our own food at the goshala, and also we distribute to all the volunteers for free the vegetables. So this is all coming from the cow. The gomata is in the center, and also Nandi, right? We have the bulls. So see, every part of our body there is a Devi Devata. For example, Man is Chandraman. The moon is the mind, our for God for the mind. Like that, the personification deity of Bhu Devi, that is nothing but Gomata. When the Krishna want to appear, Dharma Samsthapanarthaya, Sambhavami Yuge Yuge. So at that time, the Mother Earth went in a form of a Surabhi to see Lord Vishnu or Krishna. And why she chosen only Surabhi? Like why she chosen as a only Gomata? Because the personification of Mother Earth is nothing but a cow. So we are living on these earthly planets. We have to take care of the Mother Earth and also to Mother Cow, right? So she went to Lord Krishna, and Krishna said, I cannot hold this much sinful activities on this planet, and you come up here, right? So she requested, and she put a recommendation. When even from Indra, the Govardhana pastimes, right, Samvartaka clouds, when Indra got chastised, Indra took Mother Surabhi as a referral, in front. Mother Surabhi went, and then Krishna forgave Indra. So like that. So this everything is a cow centric life. So in 2019, Suti, I went to before I start goshala, I travel all over the world. So, and also especially I went to Rajasthan in the border of Pakistan. So there is a goshala called Patmeda. So they have more than 200,000 cows. So how they feed the cows, what are the ingredients? So I am using in North America same food. I put ashwagandha, shatavari, and turmeric, jaggery, salt, mustard oil, and corn, wheat, and we have our own grinder. So we grind our own food for the cows.
and I don't buy from the store like all this. And also we give fermented alfalfa grass to the gomata. So if cows are happy, naturally everything will in place and everybody will be happy, right? All these products, if you take our cow's milk here, I don't know when you come to US next time or first time, आपको हमारा गाय का दूध will give you so naturally. They are very loving by themselves, and the milk coming from them is so. And I don't tie the cows; I leave them alone, and then so they come by themselves. If it rain, they come inside. If it is no rain, they go outside like that. So, as you said, this cow is a central part of our culture. Thank you so much, Prabhuji. Your honesty is really helping us. It is giving us a clear picture of what an ideal गौशाला looks like. और क्योंकि आपने अपने गुरु महाराज की आज्ञा को, उनके इंस्ट्रक्शन को इतना सीरियसली लिया है और सिंसियरली फॉलो किया है, आपको गौ माता और गुरुदेव और शिल प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स मिली हैं, जिसके माध्यम से आज पूरा कैलिफोर्निया ही गौ माता के विषय में जागरूक हो रहा है. प्रभु जी, मुझे ये बताइए कि आपकी ये जो गौशाला है, अभी क्योंकि जो नॉर्मल एबनॉर्मल डेयरी फार्म्स है, वहां पर एक प्रोसेस है, एक फिक्स्ड पैटर्न है जिस पर कार्य किया जाता है. जैसे पहले एक गाय को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, फिर डिलीवरी का वेट किया जाता है, जैसे ही डिलीवरी होती है बच्चे को अलग किया जाता है, दूध निकाला जाता है, एंड वंस द काउ स्टॉप्स मिल्किंग शी इज इम्प्रेग्नेटेड अगेन. ये पैटर्न है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा. आपकी गौशाला में ये मेटिंग, रिप्रोडक्शन और मिल्किंग का पैटर्न क्या है? बिकॉज ऑफ कोर्स हम आपकी बातों में पूरा विश्वास करते हैं कि ये पूरी तरीके से अहिंसा है. तो नेचुरली काउस का अपना टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ लाइफ कैसा अप्रोच होता है? So yeah, we have one bull by Krishna's. 2 days ago, the bull is passed away. His name is Giriraj, and is a Prajapati for our cows, all our calves. So, and we don't do inbreeding in our goshala, and also naturally the cows are with the bull, our Nandi. So the Giriraj, and then the and I asked one devotee in India who takes care of the cows, around 700 cows. You might be knowing him, Gopal Bhai Sutaria. I saw you did a show with him, and and Damodar Dulal Prabhu, and few cow lovers who are really taking care of them. So every calf, then is 18 months gap should be there, so that gomata get rest, and then only you can do the mating with the bulls and get the calves. If you just do every year, like after 9 months, again pregnant, she won't be happy, and she the hormones and the stress coming from the gomata, it will directly goes to the milk. Oh, इसीलिए then we follow that pattern. अभी 5 साल से from 12 cows now we have 30. So then you can see the proportion. Every 18 months only we now अभी मैं bulls को ब्रह्मचारी आश्रम में भेज दिया. So they are separated from the cows, and they never, after 18 months only we have the regular pattern, and then so they get a babies, and then all their life till 1 year, if it's a bull, it is with mother only, and we never separate them. So somebody said if you don't separate, the milk won't come. It's I don't see that, because calf drinks how much milk it wants, and it won't drink over that, and the rest it will comes to the humans, right? So that's why we have 4 teats, 2 teats for the humans, 2 teats for the calf, right? So, and also we don't tie, or we just do the hand milking, even though it takes some time, but it's natural process. So everything you do natural. It is like one time I did a poll in Palo Alto. अब इधर दूसरा शहर पे हम एक पत्र दिया बच्चों लोग को, गो माता मिल्क, वेयर इट कम्स फ्रॉम, वेयर द काउस मिल्क कम फ्रॉम. उसमें 4 आंसर दिया, वॉलमार्ट, काउस, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड. बोथ हमारा किड्स इधर, दोस आर ग्रोइंग अप इन यूएस, they check mark as a Walmart or Target or whatever the stores available. वो गाय का मिल्क कहाँ आता है अभी हमारे बच्चों को नहीं जानता है. इसीलिए 1 generation is enough to cut out of all our culture. हमारा कल्चर कहाँ भी हम रहेंगे, यूरोप में, यूएस में, इंडिया में, हम गाय को उसका
uska we have to keep them with the altar, and also keep them at the if possible at the goshala or at the backyards, and worship them and take care of them, right? So wo santrupti aapko मैं I cannot express in my words. When you have the cows, you know, हमारे बाहर काम कर को आते हैं, शाम को गाय के साथ थोड़ा बाइट को जब करता है, you know, that's good enough, you know. So everything coming from the cows is also a byproduct which is helping our culture. So that's why we do everything naturally, no artificial. Suti, I also want to mention that there is a book written by Sahadev. You know Sahadev, Pandava's younger brother, Nakula and Sahadeva. When he was in incognito, वो अज्ञातवास में रहते, so he stayed at Virat King, right? So he used to take care of the cows, and Sahadeva used to take care of the cows. Nakula used to take care of the horses. Sahadeva wrote a book about animal husbandry, how to take care of the cows. When cow is sitting, you should not disturb the cow. When cow is eating the grass, we should not disturb. How cow sleeps, ये सभी वो बुक में संस्कृत में है book. So that is translated into Orissa now, and ये there's in a library in Tanjavur. अभी ये हमारा महाराज से पूछा है, हम वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. So then we'll get to know what is the natural way of taking care of the cows. I'm sure, Prabhuji, what Sahadev ji is written is not far off different from what you're doing. Natural तरीके से ही आप सब कुछ कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा जान के कि आपका ये जो गौ माता के प्रति आप उनकी प्राइवेसी को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन सिस्टम को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी प्राइवेसी, उनकी इंटीमेसी, उनका जो एक वैल्यू सिस्टम है, उनकी डिग्निटी, दैट्स द राइट वर्ड, गौ माता की डिग्निटी को मेंटेन करना और उसे रिस्पेक्ट करना, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना, ये एक दिस इज द बेयर मिनिमम. इस चीज को यहाँ पर हम इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स द बेयर मिनिमम. लेकिन आज समय इतना खराब चल रहा है कि इस बेयर मिनिमम के लिए भी आज हम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि फाइनली एक ऐसा स्थान है जहां पर गौ माता को बेयर मिनिमम दिया जाता है. प्रभु जी, आप दर्शकों को अपने उस राजस्थान वाले ये जो आप चारा और पानी की वो सेवा करते हैं, उस विषय में कुछ बताइए. आप बताइए कि ये सेवा आपको सबसे पहली बार कहाँ कैसे प्राप्त हुई, और इस सेवा को करने में, क्योंकि आप यहाँ पर कैलिफोर्निया में हैं और वो सेवा आप राजस्थान में दे रहे हैं, तो हाउ डू यू कम्युनिकेट एंड हाउ डज इट गो ऑन? So in 2019, there was a cyclone came late in Rajasthan. So mera statistics, and also I looked up online, there is 1 lakh, more than 1 lakh cows died because of no water. So, and no food, because there is no rain, no rain, no water, no food for the cows. So एक महंत ने, वो मध्व संप्रदाय में पेजावर स्वामी, उसका शिष्य था, वो ही पोस्टेड ए वीडियो अबाउट दैट दिस काउस नीड हेल्प. सो देन हमारा नॉन प्रॉफिट, हमारा गौशाला संस्था थे, सो वी कलेक्टेड डोनेशंस इन नॉर्थ अमेरिका. हम कैलिफोर्निया में सभी मेरा फ्रेंड्स और हमारा गौशाला वॉलंटियर्स. देन आई ट्रैवल्ड पर्सनली टू Rajasthan, where Badmer, Jaisalmer, and in the extreme. So on the way, I took some Bhagavatam sets, because my other service at the temple is to take care of the distributing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. So I took the Bhagavatam sets from Ahmedabad temple. I rented a car there, and then I took 2 devotees with me, and we went to this interior parts of Rajasthan. So while I'm doing this thing, one businessman from Namdhari Seeds is he owns a big in Ludhiana, big seed based company. So he said, you are doing this thing, so I want to also help you. So he sent trucks from Haryana around to the 10 villages. So I personally went to these villages, and if I seen the cows, how they are dying on the roadside, so many cows.
So we went to all these villages and gave that, instead of we chosen a school in the village, and we gave the chara to the cows, and all the cows came and ate for at least for 10 days, and after that the rain came. So it's a great experience living. And I came to know each family member in Rajasthan, they have at least 500 cows. They go for, in Suti, we know we have this called Gochara Bhumi. Gochara Bhumi means in olden days, now all Gochara Bhumis becomes shopping malls, especially in other parts of India. Right? This Gochara Bhumi is where cows go and freely graze and they come back home. That is the model. And uh, this, especially in Rajasthan, they go out and the villagers provide some land for the cows. They go for grazing and they come back, and evening gives the milk, and again they go back. And you no need to have cleaning the goshala. There is no such a concept. But this Gochara Bhumi is not there now. The cows are dying because of this. So we said we want to help this cause. So when I went, I got so much support locally also from all our ISKCON temples, and also from the local villagers. And that's the first time I ate Rajasthani food with the three levels of ghee on a roti, and of course it's ahimsa ghee. So yeah, it is and also the cows goes to the Pakistan border, and the BSF, right, border security force, they actually do the cow grazing, and they come back in the evening. So Harshnani, a village just 25 kilometers away from Pakistan, I went there. Very, very rich culture, and nobody thought of cow killing, and they don't know that concept at all. But because of this extreme weather, I went and supported from our non-profit organization in North America. So yeah, that's a story which get so much satisfaction after, at least from a small organization like us, and we can do at least 10 villages. So yeah, that's the story about Rajasthan. So जी, बहुत and बहुत धन्यवाद जी। I also got experience by traveling, Suti, meeting these people who take care of the cows, right? I came to know how they feed them, what is the proportions to feed them, so by traveling, we learn. When I go door to door book distribution, by giving to the people the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and we know to know their mood, and how Srila Prabhupada emphasized this cow culture should be established. So that's why, as you see on all our Mumbai temple, we have Govardhan Eco Village, and also other farms, right? So Nilachal Dham, so like that. So like that, every temple, if it connects to the farm, and the cow production will become easy, and people will get aware, and they don't give the cows for the people who slaughter them, right? So they'll keep it. That's why this cownomics is very important. जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आई एग्री विथ एवरीथिंग यू सेड एंड आई लाइक दैट टर्म वेरी मच। आपने इतना सुंदर वर्ड यूज किया काउनॉमिक्स, और कहीं ना कहीं ये काउ और इकोनॉमिक्स का एक सुंदर सा समावेश है जो हमें इस चीज के लिए प्रेरित कर रहा है, इस चीज का मोटिवेशन दे रहा है कि हम एक इकोनॉमी बिल्ड करें, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बिल्ड करें जो गौ माता से ही शुरू होती है और गौ माता पर ही खत्म होती है। और ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है, ये बिल्कुल भी डिल्यूशनल नहीं है, ये वाकई सत्य है। गोपाल भाई सुतारिया जिनकी आप बात कर रहे थे, उन्होंने हमारे शो पर आकर हमारे साथ इतनी सॉलिड टिप्स को शेयर किया था, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया था कि वो कैसे काउ बेस्ड फार्मिंग से कम लाखों 8 से 9 लाख फार्मर्स का जीवन बदल रहे हैं, उनके इनकम को सुधार रहे हैं, मूड को सुधार रहे हैं, कॉन्शियसनेस को सुधार रहे हैं, एंड ओवरऑल ही इज सेविंग देम फ्रॉम अ लॉट ऑफ बैड कर्मा। Right. प्रभु जी, मुझे ये बताइए, आप और भी इस सेवा में आप संलग्न हैं जिसका एजुकेशन से लेना देना है, ग्राम विद्या धन, इसके तहत भी आप बच्चों की फीस स्पॉन्सर करते हैं, आप उनके एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं। और कुछ समय पहले आपने बताया था कि एटलीस्ट अमेरिका के जो न्यू जनरेशन है, बच्चे हैं,
दे डोंट हैव एन एग्जैक्ट आइडिया फ्रॉम वेयर द मिल्क कम्स। और आपने कहा था कि एक जनरेशन की वजह से ही बच्चों से कल्चर जो है वो कट हो गया है। तो प्रभु जी, क्योंकि आप एजुकेशन में भी इन्वॉल्व हैं, आप बच्चों से भी डील करते हैं, आपकी खुद की दो बेटियां हैं, आपको क्या लगता है प्रभु जी कि should we have a curriculum, a setup that involves cow protection, cow seva, and the values and principles about Gaumata as a part of our formal education? और अगर ये एजुकेशन संभव नहीं है, बिकॉज जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, सोच जा रही है, ऐसा कुछ एज ऑफ नाउ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन जो लोग अपने बच्चों को गौ माता के विषय में पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं अपने बच्चों को गौ माता से जोड़ने के लिए? Uh, Again, this is excellent question because education is part of our core thing. Like Prabhupada established all these gurukulas, and I traveled when I went to these gurukulas. सभी उसका curriculum क्या होता है? सुबह 5 बजे उठना, गौ माता सेवा करना. So they have to. So morning 5 o'clock, kids comes and they pick up the cow dung. सभी आश्रम में गाय होता है. So when you serve cows, आपको discipline भी बढ़ जाएंगे. Cows gives milk on one time, and they wake up one time, and they are not like, they don't follow us like alarm clock and all those things. So उसका natural process होता है. So education. So I have two children, two boys. So weekends वो school पे जाता है, but they in the evening they ask so many questions. ओ गामाता क्यों ऐसा है, and why this cow is like this. So वो क्वेश्चंस को आंसर करने को हमको नॉलेज चाहिए. इसीलिए मैं ग्राम विद्यादान, हम शिल प्रभुपाद भागवतम सेट्स को हम विलेज विलेज में पहुंचना है. बिकॉज इन भागवतम 10th canto there are 4500 verses talking about Krishna, Lord Krishna. 4500 verses. So that's why we have to embedded this in our culture, and also especially in the education system. So they can take, say in US they take children to the field trips. Lot of schools in nearby, they come to the goshala, and they see how we milk the cow, and how we take care of, how we feed the cows. The kids will make the food for the cows. And हमारा गौशाला में every weekend बच्चों लोग के लिए we have classes from 11 to 12. And then out in the curriculum हम गाय के बारे में एक एक वीक में एक एक विषय बता we used to tell to the kids. So and also हम गाय को we give one topic to the kid. आप गौमूत्र में, so why US want to take patents on cow urine? They make a cancer medicine, right? So like that we emphasize गौ माता glories. बच्चों लोग को, young generations को हम दे सकते हैं, then it will go further away. That's why this gram vidyadan education for the children. See, I was doing some research why kids get to these bad habits at the young age. वो cigarette पीता है. The companies give free cigarettes to children, so that they get, once they attach it to at the young age, they can go their entire lifetime. So people are doing all these bad techniques to spoil the children, right? So when you give this kind of from the young generation, they know go mata dignity. That is excellent words, Stuti, you use it. So we need to teach them, this is the milk comes, and cow is sacred for us, and go matas, all devi devatas lives on the go mata, and Krishna used to take care of the cows. And what best example you need other than that, right? So this all education system, it need to come from the young age, from the at the age of 5, as Prahlad Maharaj says in Srimad Bhagavatam, right? So when it comes to young age, they will stick to it. They will help the community, they will help the society once they have this knowledge. And that's why yearly once you are living in abroad, or monthly once, at least take time, go to take your kids to the goshala or nearby where cows are living, right? So with that, you will get more, your kid get to know more about cows. And also हमारा culture आगे बढ़ जाएंगे. Prabhupada said the second generation devotees, 50% of my mission is not done, so we have to take that up.
as a responsible followers of Srila Prabhupada and Sanatan Dharma, so that we can give that knowledge to next generation. And we need to know the milk coming from the cows. So that is, and also cow dung, you have so much antiseptic values, right? When we have flies in the goshala. I just burned the cow dung, and the incense we use at goshala, we import from the Cowpathy. So all I imported from India. I don't have time to make it here. Of course, in future we'll make it here only. But for now, we are getting all these products from India. So use it and show our children. Not don't use this kind of this dairies and all, very bad for your health. So हम गुरुकुल विधान our curriculum में we need to add this as a part of their curriculum, right? So then they will get to know more about our gomata and our culture. So culture is very, very important. If there is no culture, even we cannot chant Hare Krishna, right? So culture रहना है. So they need to know. Oh, my parents used to worship cows. They used to take care of the cows. So then they will attract to our culture, like especially Sanatan Dharma. Prabhuji, every word that came out of your mouth was so powerful and it had such a strong message. और दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे इस कॉन्वर्जेशन में बने हुए हैं, ध्यान से सुन रहे हैं. आपके प्रश्नों का समय आ गया है, तो आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं. और कहीं ना कहीं प्रभु जी, आपने ये जो बात कही है कि हमें बच्चों के अंदर इस चीज को इंस्टिल करना पड़ेगा. आज का ये जो दौर है, ये एकदम साइंटिफिक दौर है. वी आर इन द 20th सेंचुरी. टेक्नोलॉजी आ गया है, इंटरनेट आ गया है, दुनिया बहुत आगे जा रही है. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन. ऐसे में अगर हमें गौ माता के विषय में बच्चों में कोई जागरूकता बढ़ानी है, वी वॉन्ट देम टू लव एंड ऑनर मदर काउ, वी ऑल्सो नीड टू पुट force into mother cow's body parts and explain to children how scientifically how important it is, and how every part that comes out of her, how every part that she has a meaning. जैसे आपने बताया कि जो गोबर है, जो पंचगव्य है, इसे अगर हम अच्छे से मिला करके उसे प्रोसेस करते हैं तो वो एकदम ए लेवल का मैन्योर हो जाता है, फर्टिलाइजर हो जाता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग आप उस चीज से कर सकते हैं अगर हम बच्चों में ऐसे प्रोसेसेस को डालें, उनके अंदर ऐसे माइंडसेट्स को डालें कि गौमूत्र की ये बेनिफिट्स हैं, गोबर के ऐसे बेनिफिट्स हैं, शुद्ध घी के ऐसे बेनिफिट्स हैं. व्हेन वी मार्केट इट इन दिस वे, तब निश्चित रूप से लोग गौ माता का सम्मान करेंगे और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे. अगर आपके आसपास कोई गौशाला है दर्शकों, तो आप अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को उस गौशाला में लेकर जाके विजिट करवा सकते हैं. उस गौशाला के ओनर से एक अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और इस विषय में एक कदम उठा सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. आई थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग ऑल दीज important insights with us. Just a few more questions and then we'll wind this up. A lot of people who live in the city face this problem that they are not connected to the mother cow directly. शहर में रहने वाले लोगों को ये बहुत ज्यादा एक दुख होता है कि उनके पास समय नहीं है. अभी आप प्रोफेशनली इतने बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर भी आप इतनी अच्छी तरीके से सेवा कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. But there are some people who are just so caged within their professional life that they have no time for their own personal life and for any other hobbies that they want to develop. तो आप बताइए प्रभु जी, ऐसे में जहां व्यक्ति के पास समय नहीं है, शहर में रह रहा है, काउस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, वो कैसे गौ माता की सेवा कर सकता है और गौ माता को स्लॉटर होने से बचा सकता है? Oh yeah, it's an excellent question, because a lot of people don't have the like same facility what Krishna provided to us. Like, backyard mein gai rehne ko, it's, you live in a high rise apartment. How can you have at least you our consciousness should be there that हम गौ माता को altar में रखेंगे. Like, so we have a small cow. We use the products like cow products, like the dhoop batti, so the incense and everything, like you use not refined oils. You use the oils which is which used using bull tilling.
लाइक आप आपके शो में बहुत लोग इस बारे में चर्चा किया है. So and also your consciousness is there that at least monthly once I go to nearby goshala, or yearly once, or yearly twice. So consciousness is more important than you, like everybody cannot physically serve cows, so you can help them in different ways. आप scientific paper लिख सकता है, you are a professor, you can do research. Like in IIT recently, one devotee is from IIT professor. He wrote a book, why in Annamacharya Kirtanas there is so much mention about cows, and in Bhagavad why only cows. So like that, आप कोई profession में हो तो कोई problem नहीं. आप you have to keep cow in the center, then you will get the same benefit, right? So like people, I cannot go to goshala every day, I cannot feed the cows every day, no problem. So just you do some seva indirectly for the cow, right? So then it will have a major impact. Some people make a, like for example, take these cow products, and we no need like profit on it. You just give it to the people like a barter system, right? And help, like, oh, I bought this product, and it coming from this certain goshala or certain place, certain manufacturer. So if you tell each and individuals in the city, and they have these WhatsApp groups, at least gau ke bare mein, there in Europe there was a rule. In every Srimad Bhagavatam class you have to talk about cows, you have to talk about varnashrama. So that was the rule. So like that, you read Srimad Bhagavatam, and you think about gomata, and you do seva, some, like ahimsa cloth where we wear. You should embed it as a part of your daily routine. Like in olden days, like if you go on a train, people used to sing Ram Charitmanas, right? Because it's part of our culture. It is in Vyavaharika Bhasha. That's in Hindi, so that people can easily connect, right? So like that, I told about this book. So you can translate it to Marathi, you can translate it to Hindi, and make this ecosystem. And there is Om Sri Surabhi campaign started by Bhakti Raghav Maharaj. There is a research team for this, and we need volunteers in everywhere, like to make this help. And go to nearby ISKCON temple, and be part of the cow protection team there, and help. So it can be anywhere, not only ISKCON, or any who is protecting our gomatas. Just be part of it. Either you can do so much seva, just even thinking about the gomata, that place become kshetra. So what about you do some seva for them? So that's my realization. If you work with the cows, see, when we started the non-profit, Suti, we didn't have goshala. We started a non-profit. It took 5 years to do the research, to get the education, to get the knowledge, and then only 2020 we started, right? So it's 5 years, 10 years in the non-profit. So like that, we need to get that knowledge and awareness, so that if you uh, take care of Krishna holy beings, Lord Krishna will take care of us. So जी, I completely agree with you, Prabhu ji. And what you have put forth is a wonderful thing. दर्शकों, प्रभु जी ने ऐसा कहा है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जो भी करते हैं, आप उसमें गौ माता को इंक्लूड कीजिए. I mean, this is exactly what Srila Prabhupada said when it came to worshipping Krishna in daily life. हमें कुछ छोड़ना नहीं है, केवल कृष्ण को जोड़ना है. एंड इन द सेम वे कुछ छोड़ना नहीं है, केवल गौ माता को जोड़ना है. आप मतलब the least you can do is just share this live session with somebody. That in itself is a step towards cow protection and gau mata ki seva. Prabhu ji, what an ideal गौशाला looks like. I mean, what you've described so far, आपने जो अब तक वर्णन किया है, वो तो अपने आप में बहुत सुंदर है ही. लेकिन कहीं ना कहीं एक जो गौशाला है, लाइक जब हमें एजुकेशन लेना होता है तो हम किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में या फिर भविष्य में ऐसे गौशाला होने चाहिए जो अपने आप में काउ बेस्ड एजुकेशन दे, जो लोगों को इस बारे में अवेयरनेस फैलाएं? आई मीन, व्हेन वी स्लाइटली थिंक ऑफ एन ऑर्फनेज, वी फील पिटी, हमें दया आती है उन लोगों के प्रति कि उनके माता पिता नहीं है. ऑर्फनेज इज अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स स्टे, एंड सिमिलरली फॉर ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम.
तो कहीं ना कहीं गौशाला के लिए भी यही धारणा है, वी फील पिटी फॉर द काउज व्हेन वी फॉर द काउज दैट आर इन द गौशाला। जब हम ऐसे गायों को देखते हैं जो गौशाला में है, तो कहीं ना कहीं एक दया की भावना आती है। इट फील्स लाइक द काउज दैट आर इन द गौशाला आर द अबैंडन्ड वंस, द यूजलेस वंस, द टॉर्चर्ड वंस, द अनहेल्दी वंस। पर कहीं ना कहीं डू यू थिंक दैट वी नीड टू शिफ्ट द नैरेटिव? It should come across as if a gaushala is a place for education where you can go and get education regarding Gaumata. Please Yes, enlighten. yes. So this there is goshala is there. Also Panjrapur. You know that like they mix up with all the cows, and I'm not saying we have to do everything because everything have certain value. But हमारा goshala में the model should be like that. Cow should be freely grazed. We never tied up. We should not have more cows in a small place, right? So see, our goshala is 10 acres. So I have 30 cows. So I do the rotational grazing. गाय को एक बुल्स को एक दिन ग्रेजिंग को छोड़ता है, then next day I put the cows in the grazing, like that, you know. So everything we should thought through it, and we should not. So when they come and see our cows, they should feel happiness, as you said. Pity thing is, you know, it happens when you, at least they are doing the protection, they are having it one place. But गाय को तीन rope रस्सी से बांध लेते हैं, then he won't be happy, you know, just staying and then giving the milk. That's not our goal. You know, when you read Krishna book, so the 90,000 cows, they go to Vrindavan forest and they graze. Grazing is very important. Cow grazing, you know, by cow grazing you can grow so much crops. Just, you know, when cow goes on mother earth, it is like or a bull. If you use a bull tilling, not use the tractor, it is like a massage for mother earth, right? You know, then they walk, and then when Bhakti Raghav Maharaj came here, Maharaj mentioned, if the bull goes in urine in multiple intervals, so it's a fertilizer for the earth. And where cow goes one time the urine, right? So like that he was mentioning, sabhi Bhagavan aisa prakriti banaya, we can it's everything is natural, koi invention ko jarurat nahi. So we just do it as how they are, the naturally they grew up, and you use the bulls and cows for the farming and like that. So uh, it is very very helpful and very conducive for Krishna consciousness also. So um, yeah, that's what I want to highlight. Suti, what you mentioned is exactly, गाय को हम जुड़ाना है, like we, it should be part of our culture and our family life also. थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा एक आखिरी प्रश्न है, उसके बाद हम दर्शकों के प्रश्न लेंगे। कुछ प्रश्न आए हैं आपके लिए। प्रभु जी, अक्सर आज के दौर में जब काउ प्रोटेक्शन की बात होती है, जब गौ माता को बचाने की बात होती है, एनिमल केयर की बात होती है, तो एक सेपरेट सेक्शन है सोसाइटी का जो वीगनिज्म को फॉलो करते हैं, जो ऐसे किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं करते जो एनिमल्स के थ्रू आता है। और शुरुआत में जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अब्रॉड से हैं, इंडिया से हैं। उन्होंने कहा था कि as a devotee of Lord Krishna, you have to enter into the field and take up the responsibility of cow protection. Not drinking cow's milk is not going to solve the problem. The problem is the cow is being tortured. So you have to enter into the field and stop that. And how do we stop that? From serving and protecting mother cow. प्रभु जी, व्हाट डू यू थिंक इफ शिला प्रभुपाद हैड बीन हियर, मतलब अगर वो शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पर आज उपस्थित होते, तो वो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, डेयरी इंडस्ट्री में हो रहे टॉर्चर को देखते हुए, स्लॉटर को देखते हुए, और हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में आज जो भी दूध, घी, पनीर ये सब यूज हो रहा है, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, व्हाट डू यू थिंक ही मस्ट हैव डन और सेड इन दिस रिगार्ड? Yeah, so when Prabhupada started this movement in Western world, especially at that time, he went to New Vrindavan and said, "You should have cows." And then he personally stayed. And then Prabhupada want to also establish Gita Nagari. So there is a book Bhakti Raghav Maharaj mentioned. It's in our library also. So the Gita Nagari, how we live our life according to Gita, Bhagavad Gita, right? That's why it's called Gita Nagari. So Prabhupada
initially there is no, at the time, no goshalas, no temples, nothing. So he is okay to buy milk from the stores and then offer it as a boga. But Prabhupada said that varnashrama dharma should be uh, established and implemented, and also the cows are the center of varnashrama dharma. So, and Prabhupada, if he is here right now, he won't allow any milk coming from the mandi or the dairy to the temples. And I know it's practically, it is it may not probable, but there is, where there is a will, there is a way, right? And there is one temple in Laguna Beach. uh, they use only ahimsa milk for the temple boga. They ship it from Hawaii to here, and that milk, and then they offer for the deities and not for the congregation. But eventually the congregation should also get the same, like the prasad from the deities, right? So like that, he will definitely, that's why Prabhupada emphasized every goshala, every temple should be connected to goshala. Every temple should connect to a farm. It's an entire ecosystem. It's not only goshala. Like, the vegetables we buy and the milk we get, everything should be ahimsa, right? Then only his dream will be fulfilled, right? If you offer, like Janmashtami, we offer a milk coming from outside where the cows are tortured, and the calves never drink the milk. Do you think Krishna will be happy? Or you just offer a without milk, some coconut milk, you put it, and Krishna will be happy with that. We no need to have, like, all paneer and cheese, and sandesh, all those milks. We think that Lord will be very pleased with that. But Krishna, Shakti and Shaktiman, Krishna and Krishna system, both are very, very important. So, and Prabhupada emphasized that, and by living his standards, by followers of Srila Prabhupada, and also Sanatan Dharma followers, every Acharya, Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, everybody in their realizations, they talked about cows. And if you go to Simhachalam, the holy place, they show the cows back every day to Lord. So the cows back, Lakshmi Devi resides. Every single day, they bring the cow to the temple and they show the back of the cow to the deity. So that much importance is there from beginning of our culture. So, and then we should continue it, and we should not, some people may be fanatic saying that, oh, why only talk about cows, there are so many other animals. But go is considered as gomata. She's the gavo vishwasya matara, she's our universal mother. So that's why Prabhupada, we need to fulfill his dream, that to have, see, we have more than 1,000 ISKCON temples all over the globe, but farms less than 100. So we have very, very less farms. So that's why we should have more farms. And um, our living basis should be countryside, and our preaching basis should be city side. So that's the message Srila Prabhupada given to us. We are preaching, no problem, stay in the city, preach, and make devotees. But the thing is, but our living basis should be in the villages, very, very conducive to for Krishna consciousness. So थैंक यू सो मच प्रभु जी. दिस thank वाज you. इंडीड अ नीडेड आंसर. आपने बहुत ही सुंदरता से और बारीकी से हमारे दर्शकों के सामने श्रील प्रभुपाद के विजन को, उनके उस अधूरे सपने को रखा है जिसे पूरा करने का दायित्व अब हमारे हाथ में है. श्रील प्रभुपाद जी आधा कार्य कर गए हैं और आधा अब हमें करना है. और अगर हम इस कार्य को करने में आलस दिखाएंगे, कमजोरी दिखाएंगे और डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हम पर बहुत भारी पड़ेगा. प्रभु जी, अभय आश्रय दास इज आस्किंग यू, माय क्वेश्चन इज, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? एनी नंबर? हमारा गौशाला वेबसाइट है bayareacows.com, srisurabhi.us. So you can contact me there, and our phone number is there on the website. थैंक यू सो मच. प्रभु जी, कैन यू आल्सो शेयर योर इंस्टाग्राम हैंडल? Yes, it's a Bay Area cows. So just you can search for Bay Area cows, you can find, and we have a lot of videos posted on there. So पूर्णा जी पूछ रही हैं, इन शिव पुराण इट इज रिटेड दैट one should not trade dairy products
but no one follows that and become greedy and try to torture cows. Was there any time when dairy products were not traded? तो पूर्णा जी कह रही हैं कि शिव पुराण में इस चीज का वर्णन है कि किसी को दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का व्यापार यानी बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में दूध डेयरी इंडस्ट्री ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। लोग लोभ के कारण गौ माता को टॉर्चर कर रहे हैं। तो क्या हमारी दुनिया में, हमारे इस इतिहास में कभी ऐसा एक समय था जब दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का व्यापार नहीं होता था? So I also heard this that we should not sell milk and ghee, and we should not sell education also. So, but practically, uh, uh, if the Gwala have to survive, then Prabhupada make these adjustments. Puran mein. So time and circumstance. So like we should not buy milk from dairies. That's period. There is no. That's what. My realization or my understanding is that we should support the goshalas which is following these standards. And how do you support them? You go and do seva. That is perfect. If you cannot do seva, at least kuch to kuch, buy from them, and that helps the community and the society also. So and then the cows will be protected by buying the milk from them, and they can produce more cows like that. So and also more milk products, so that it won't be like a, not for the greedy, but how Gwala can survive if we cannot sell it, right? So yeah, but it's a good question. I heard, yeah, dairy products should not be sold, but now education is now without fees. You cannot send your kid to school, right? So like that, to survive, to make this culture cownomics. That's why it comes to cownomics. When गो आधारित व्यवसाय हम करना है, तो ग्वाला को हम सपोर्ट करना है, गो माता को हम सपोर्ट कर. So we need to support those authentic goshalas who gives the authentic milk to the, even though it's expensive, we should buy. थैंक यू सो मच प्रभु जी। अब प्रभु जी, कुछ समय पहले आपने ऐसा वर्णन किया था कि आप अपने घर के प्रोडक्ट्स को काउपैथी से खरीदते हैं। दोज प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया। आप बताइए प्रभु जी, काउपैथी के प्रोडक्ट्स को यूज करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर, आई हैड द फॉर्च्यून ऑफ इंटरव्यूइंग द फाउंडर ऑफ काउपैथी, उरुक्रम गोपाल Yes, प्रभु जी, yes, और yes. उन्होंने बहुत सुंदरता से इस विषय पर बात किया था। यू आर एन एविड कस्टमर ऑफ काउपैथी, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और दर्शकों को बताइए। No, it's whatever is making all these products. The good part is, he makes it more, not only like, for example, fancy bhi lagata hai. Like, he put rose water with the cow panchagavya and all those things. So those things will, especially the children, the youth, वो attract हो जाता है. This so smells so good, and also it's supporting, and in each and everything. I also used Cowpathy, Go Seva, and a few all other products. He's of course he's a devotee, and he's running his family and his company by selling these products. So it's a great experience, and all the incense and everything to also modernize it. Not only traditional, he made it modernized. So I think you are using Suti. I also use his products, and there is a lot of demand for it right now with the new tariffs to this country. We are importing less, but in the past, like last 2-3 months before that, every Sunday, Saturday, people will ask, oh, can I get that soap, pancha gavya soap, and also the mango flavored or all kinds of flavored seafoods, right? So that's this I'm it's also good for the people, and you are helping the organization, which is cows are in the center, right? So, and also Diwali ke time par may gift so like we give the gifts to our donors, our like instead of giving something else, right? So we can give these products, they can use it, so. थैंक यू सो मच प्रभु जी। विद दिस आई लाइक टू एंड द सेशन। मैं हमारी पूरी टीम की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप भारत से कोसों दूर, इतने किलोमीटर्स दूर भी आपने उस परंपरा को जीवित रखा है। आप तन मन धन अपनी आत्मा से गौ सेवा कर रहे हैं, और जहां तक आपका हाथ, आपकी दृष्टि, आपकी सोच पहुंच रही है, वहां तक आप गौ माता की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे बस हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा
गौ माता की सेवा में ऐसे ही लगे रहिए, गौ माता की ग्लोरीज को घर घर तक पहुंचाइए और भविष्य में भी निश्चित रूप से हमारे साथ ऐसे ही जुड़िए। Thank you, Suti. Thanks for opportunity and to Hare Krishna Television and to you to make this more programs like this so that everybody will get educated. Thank you again. Hare Krishna. हरे Jai कृष्ण। Gomata. दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। ये हमारे रिपीटेड प्रयासों में से एक प्रयास था जहां पर हम आपको सात्विक लाइफस्टाइल जीने के लिए प्रेरित करते हैं, गौ माता की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं और आपको कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि गौ माता की सेवा करना इतना आवश्यक क्यों है। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मैं कमल मट्टा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारी यूट्यूब लाइव मेंबरशिप को परचेज किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेलकम टू द फैमिली। दर्शकों, प्लीज आप ये शो खत्म होते ही काउपैथी को सर्च कीजिए, एक एक प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़िए क्या है, कैसे बना है, कितना समय तक टिकेगा, कैसा कैसा प्रोसेस किया है और प्लीज आप एटलीस्ट एक प्रोडक्ट को लेके ट्राई कीजिए। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। प्लीज आप उस काउपैथी की वेबसाइट को जाके विजिट कीजिए। काउपैथी के वेबसाइट पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पंचगव्य से बनते हैं। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन 5 अमृत से बनते हैं और कहीं ना कहीं काउपैथी के द्वारा जो उरुक्रम गोपाल प्रभु जी हैं, काउपैथी के फाउंडर हैं, वो ऐसे ही काउस को यूज करते हैं जो दूध नहीं देती हैं, क्योंकि भले ही गाय दूध देना बंद करे लेकिन वो गोबर और गौमूत्र तो आजीवन देंगी। इसके लिए वो अपने इस पहल के तहत गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने ब्रांड खोल के प्रोडक्ट्स लॉन्च करके आधा काम किया है, आधे से ज्यादा काम आपको और मुझे करना है काउपैथी के प्रोडक्ट्स को यूज करके। अब काउपैथी ऐसे ही डेली लाइफ एसेंशियल्स तैयार करता है। ऐसा तो है नहीं कि आप साल में एक बार साबुन खरीदेंगे या 5 साल में एक बार टूथपेस्ट खरीदेंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम रोज यूज करते हैं। बाजार में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल फैट को यूज करते हैं और भक्तों को ऐसे प्रोडक्ट से बचना चाहिए। हम एकादशी का व्रत करते हैं, इतने सारे त्योहार मनाते हैं एंड वी क्लेम टू बी वेजिटेरियंस, प्योर वेजिटेरियंस, कृष्णटेरियंस, लेकिन अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो ओवरऑल हमारी प्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। साथ ही हमने दिवाली के विषय में आज बात की है। प्लीज आप ऐसी मिठाइयों को ना ले जिसमें दूध होता है या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और अगर आप ऐसी मिठाइयों को लेना चाहते हैं तो आप ऐसे ही सोर्सेज से लें जो अहिंसा घी या अहिंसा दूध का उपयोग करते हैं। सेशन खत्म करने से पहले, मुझे हटने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक अनाउंसमेंट करनी है। कैन वी प्लीज हैव द पोस्टर? गेट रेडी टू टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत ही सुंदर पोस्टर आने वाला है जो आपको ये बताने वाला है कि कल से एक बहुत ही सुंदर लाइव कथा लगने वाली है। जो लोग लखनऊ के हैं वो वास्तविक रूप में जाके व्यक्तिगत रूप से उस कथा का लाभ ले सकते हैं, पर जो लोग लखनऊ में नहीं है और फिर भी इस कथा का लाभ लेना चाहते हैं वो हरे कृष्णा टीवी के लाइव सेशंस के थ्रू इस कथा का लाभ ले सकते हैं। 16 से 22 अक्टूबर 5 से रात 8 बजे तक। उम्मीद करती हूँ आप सभी इस कथा का लाभ लेंगे। आप सभी हमारे कमेंट सेक्शन को अपने ऑनेस्ट व्यूज, फीडबैक्स, ओपिनियंस, रियलाइजेशंस, सजेशंस से भर देंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कम्युनिकेट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हरे कृष्णा टीवी के साथ।